Hey guys, welcome to my channel. So as promised, I started making a series of videos in which I'm gonna talk about women health and hygiene. So this is the first part of my series in which I'm gonna talk about the intimate hygiene of women. In most of the women बहुत सारे health issues ऐसे होते हैं जो कि just because of hygiene की वजह से होते हैं. Like if you don't maintain a good hygiene of yourself, then you're gonna suffer a lot. So आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे अपना इंटीमेट हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं. सो आई एम गोना टेल यू क्विकली फ्यू पॉइंट्स जो कि आप अगर आप ध्यान में रखें देन यू कैन ऑब्वियसली इंक्रीज द हेल्थ एंड हाइजीन ऑफ योर इंटीमेट एरियाज. आई एम गोना टेल यू क्विकली व्हाट आर दोज थिंग्स दैट यू कैन टेक केयर ऑफ एंड जिसकी वजह से आपका इंटीमेट हेल्थ एंड हाइजीन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है. सो दीज आर वेरी फ्यू लिटिल थिंग्स, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के you can obviously make a difference in your intimate health. Keep your undergarments always dry. Like तो ऐसे बहुत छोटी सी बात है, बट आप इस बात का ध्यान रख के बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बच सकते हैं. If you keep your undergarment dry, then only you're gonna decrease the chances of getting an इन्फेक्शन. पॉइंट जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है वो है ये कि आप अपना सैनिटरी नैपकिन हर 4 to 6 आवर्स में चेंज करें, बिकॉज changing sanitary napkin after very long time can increase the chances of getting infection. So always keep in mind that use a hygienic and a good brand sanitary napkin. Never use clothes, and always try to change your sanitary napkin in a time interval of 4 to 6 hours. Anything that has moisture in it, ऑब्वियसली वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत हाई होते हैं. बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं. सो आप इस छोटी सी बात का ध्यान रख के यू कैन ऑब्वियसली मेक अ डिफरेंस. Third thing that you have to take care is to always try to use a good quality intimate wash, because vagina has its own pH balance, और ये बैलेंस जब बिगड़ता है then only bacteria vagina में grow करना start करते हैं and you start getting vaginal infections. So always try to use a good quality vaginal wash instead of using soap, because soap में बहुत ही harmful chemicals होते हैं and soap is really harsh for our vaginal area, because like intimate area के जो भी skin होती है that is very much sensitive in comparison to other body parts. So always try to use a good vaginal wash instead of using soap in it. The fourth point that you have to take care is always try to eat food that is rich in lactic acid, because yogurt contain a good amount of good bacteria that are good for our health and for our body. And yogurt हमारे vagina में lactic acid production को increase करता है, and lactic acid जो है वो हमारे vagina के acidic pH को maintain करने में help करता है. Also जो भी harmful bacteria है उसको grow करने से रोकता है. Fifth point is avoid using scented wipes, scented deodorants or scrub around your intimate area. That causes infection and rashes around your intimate area. Soaps and any kind of chemical containing product like scrub or any scented deo that is very harsh and have a lot of chemicals in it. So try to avoid those things and always try to use a very mild cleanser or intimate wash. Just you always try to use cotton undergarments and cotton clothes, and always try to wear light clothes and airy clothes, and don't use very उसके वजह से एयर सर्कुलेशन उतनी अच्छे से नहीं हो पाती है किसी भी पार्ट की, एंड जिस जगह पे एयर सर्कुलेशन उतनी अच्छी नहीं हो वहाँ पे हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं. सो आई सजेस्ट यू कि हमेशा टाइट क्लोथ्स ना पहने, हम थोड़ा एरी एंड कॉटन क्लोथ्स पहनने की कोशिश भी करें दिन में, लाइक 24 आवर्स में एटलीस्ट. इफ यू आर वेयरिंग अ टाइट क्लोथ फॉर सम टाइम, थोड़े टाइम ट्राई टू वेयर कॉटन एंड अ काइंड ऑफ एरी क्लोथ्स. This point is don't always shave the hairs around the intimate area, because the skin around our intimate area are really sensitive. That is why we have hairs around it, and everything has its own purpose. हमारे hairs का भी अपना purpose है, and that is like कि जो भी इन्फेक्शन होते हैं, जो भी बैक्टीरिया होती है उसको डायरेक्टली स्किन में पेनिट्रेट करने के लिए एक बैरियर की तरह जो भी प्यूबिक हेयर्स है वो काम करते हैं. सो आई सजेस्ट यू डोंट ऑलवेज शेव द
entire hair around your pubic area. Next thing is, beside keeping your undergarments dry, always try to change your undergarment in every 8 to 10 hours, because जो हमारे बॉडी में क्लोथ्स होते हैं उसमें हमारी बॉडी के बहुत सारे ड्राई स्किन एंड स्वेट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लग जाती है, जमा हो जाती है, जो कि बॉडी में बहुत देर सटे रहने से भी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं. सो इट्स बेटर टू चेंज योर अंडरगारमेंट्स सो दैट एंड क्लीन एंड वाइप द इंटीमेट एरिया एज वेल, सो दैट जो इन्फेक्शन के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाए. Next point is, always try to ignore public washrooms, because that is not hygienic at all. भले आप किसी भी 5-star होटल के भी पब्लिक वॉशरूम में जाए, बट दैट इज़ नॉट एट ऑल हाइजीनिक. एंड इंडिया में वजाइनल इन्फेक्शन होने के मोस्टली चांसेस पब्लिक वॉशरूम यूज़ करने से भी होते हैं. सो आई सजेस्ट यू डोंट यूज़ पब्लिक वॉशरूम्स एट ऑल. नेक्स्ट पॉइंट इज़, ऑलवेज क्लीन योर वजाइना आफ्टर हैविंग इंटरकोर्स, बिकॉज ऐसा करने से क्या होता है, जो भी वजाइनल इन्फेक्शन एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होते हैं, जो भी बैक्टीरिया होते हैं, उनका ट्रांसमिशन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं. सो ऑलवेज ट्राई टू क्लीन एंड वॉश योर वजाइना आफ्टर हैविंग अस इंटरकोर्स. Next point is, always try to have a safe sex, because no matters if you're like using pills or anything, but like safe sex means always try to use barriers like condoms and all. The advantage of these barrier method is, this decreases the chance of getting sexually transmitted disease to 99%. So using condoms not only decreases the chance of you getting pregnant, but also it decreases the chances of you having HIV or syphilis, जो कि किसी भी पिल से या फिर आफ्टर कोर्स पिल लाइक emergency contraceptive pill से नहीं अचीव हो सकता है. About an intimate hygiene of women. So thank you for watching. I'll see you in the next video. And if you have any kind of questions, you can ask me in the comment, or you can DM me directly. So I'll try to give answer each one of you.